Check, check, one, two, three. Testing the mic. Ayush on this end. Tadoba Tigers to take on Periyar Panthers. Ayush on this end. Hope you can hear me. Hi, Ayush. Good afternoon. This is Radhika here. Good afternoon, Radhika. How are you doing? All good, all good. Thank you. Hello, hello. Hello, hello.
check, check, check. टडोबा टाइगर्स बनाम पेरियार पैंथर। ये जो कहानी है ये इन दो टीमों की है जो अभी थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। टडोबा टाइगर्स, पेरियार पैंथर्स। अभी टडोबा टाइगर्स को खाता खोलना बाकी। युवा कबड्डी सीरीज का मानसून एडिशन 2022 हम इस समय रांची में मौजूद है और उम्मीद की जाएगी कि ये जो मुकाबला है टडोबा टाइगर्स के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि हमने आज टेबल टॉपर्स को मैच फ्लॉपर्स होते हुए देखा है। हम्पी हीरोज ने बीड्स को वो पहली शिकस्त दी थी और उसके बाद में काजीरंगा राइनोज का मुकाबला था पंचाला प्राइड से 41-35 से वो अपने नाम किया। अरावली एरोज अपना आज का पहला मुकाबला, इनफैक्ट इस सीरीज का पहला मुकाबला हारे थे मुरथल मैग्नेट्स के सामने। टडोबा टाइगर्स और पेरियार पैंथर्स, ये वो मुकाबला है। घड़ी में बज चुके हैं 4, यानी कि समय आप सभी से जुड़ने का। फिर एक बार सेंसोनिक और मराठा मावल सामने सामने होंगे शाम को 6 बजे। लेकिन सबसे पहले ये अहम मुकाबला
चौथा मुकाबला आज के दिन का। उससे पहले निगाहें डालते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर। आज का दिन जब शुरू हुआ था तो वीर्स टेबल टॉपर थे, उसके बाद जब तीसरा मैच था तो एरोज अरावली एरोज वो टेबल टॉपर थे, और अब चौथे मैच की शुरुआत से पहले काजीरंगा राइनोज। 3 मुकाबले खेले, तीनों में जीत हासिल की। हम्पी हीरोज नंबर 2 पर है, और ये जो मुकाबला है ये आपको 9वें नंबर पर टीम नजर आ रही है टडोबा टाइगर्स, और उनका सामना पेरियर पैंथर्स जो 7वें पे है। एक मुकाबला वो जीत चुकी है। तो क्या टडोबा टाइगर्स अपना खाता खोल पाएगी, ये देखना होगा। कमेंट बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा और मेरा साथ देंगी राधिका रेड्डी। लेकिन उससे पहले मुकाबले को शुरू कर लेते हैं। राधिका, इस जो मुकाबले हैं उसकी खूबसूरती में अपनी आवाज़ और घोल दें। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं ग्राउंड एमसी के पास, ताकि ललकार दी जाए इन दोनों टीम्स के लिए। Thank you, Ayush. And now it's time to call both the teams on the mat. Please welcome Tadoba Tigers. And now please welcome Periyar Panthers. टडोबा टाइगर्स बनाम पेरियर पैंथर। खूबसूरत मुझे जर्सी नजर आती है टाइगर्स की, तो टीम के ऊपर भी निगाहें डाल लेते हैं। उदित लोहान, कल का मुकाबला बहुत ज़्यादा विशेष इनके लिए गया नहीं, प्रयास अच्छा करते हैं ये। विशाल सिंह, हिमांशु रावत आपको नजर आएंगे। और रेडर की बात करें तो दोनों ही राइट रेडर, राजन चौधरी, अर्जुन राठी इनका साथ निभाएंगे। राइट कॉर्नर की जो पोजीशन है वो पंकज शर्मा संभालेंगे, और डिफेंडर में लेफ्ट कॉर्नर जो है वो दिनेश नरवाल, उनकी जिम्मेदारी वहां बन जाएगी कि कुछ अहम भूमिका निभाएं। तीनों लोग अगर शुभम, मोहम्मद शाहिद, ये वो खिलाड़ी होंगे जो सबस की पोजीशन संभालेंगे, लेकिन मौका इनको भी मिलता है, निर्भर करता है इनके कोच पे। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा और मेरा साथ देने के लिए राधिका। स्वागत है राधिका। A very good evening to everybody who is watching this particular match on Fan Code here, and looking at this top 7 of Periyar Panthers. At the far corners, the right and left corners, we'll say Vijay Dul and also Harsh Singh. As Raiders, we'll be having Sandeep Raina and Ajay Pandit and Akshat Dul. In the cover positions, it would be Gaurav Chilor and Ravi Khatri. So looks like an okay team for me, because they have won just the first match against the Murtal Magnets, but then they have lost the match yesterday against Aravali Arrows. So it's so important for them to get on the winning ways. Wherein if you look at Tadoba Tigers, unfortunately they have lost both of them. चलिए, कुछ समय पहले टॉस हुआ और टॉस का जो निर्णय है वो पेरियर पैंथर्स के खेमे की तरफ गया था, जिन्होंने एक कोर्ट चूज किया। कोर्ट है लेफ्ट वाला, यानी कि पहली जो रेड है राधिका वो हमें टडोबा टाइगर्स की तरफ से नजर आएगी। Absolutely, we should be talking about Arjun Rathi, who is one of the prominent members in the mix for Tadoba Tigers raiding department. Yes, here we see him on the screen too. So this would be the raider we would be eyeing on, and absolutely Periyar Panthers, the defense moving on Arish. और वहीं दूसरी तरफ जो आपको टीम नजर आ रही है पेरियर पैंथर्स, जिन्होंने एक मुकाबला अभी अपने नाम किया। अक्षत दुल, रवि खत्री, इनके ऊपर निगाहें रखिएगा। अर्जुन राठी के स्टैट्स देख लेते हैं। 2 मुकाबले खेले और 29 रेड पॉइंट इनके हैं। स्ट्राइक रेट जो है इनकी 64.44 की। कैसे देखते हैं राधिका आप इनको? औसतन देखेंगे तो लगभग 15 पॉइंट इन्होंने निकाले हैं। I mean, individually he has done brilliantly. Look at the strike rate. So looks like the team is over dependent on him, but then I feel the rest of the Raiders, like Ranjan and also Udit, should support him.
पेरियर पैंथर्स खेमा इनका भी अच्छा है, एक मुकाबला इन्होंने जीता है, इसका मतलब कॉन्फिडेंस हल्का सा वो टॉपिश एंड के ऊपर होगा क्योंकि विरोधी टीम अभी खाता खोल नहीं पाई है। लेकिन आज के हमने पिछले मुकाबलों में देखा है कि जो टीम टेबल टॉपर रही है उनसे गलतियां ज़्यादा हुई है। तो क्या यहाँ गलतियों की गुंजाइश कुछ है पेरियर पैंथर्स के पास? गुंजाइश अगर नहीं है किसी टीम के पास तो वो निश्चित तौर पे टडोबा टाइगर्स है, क्योंकि ये सर्वाइवल राउंड है राधिका। यहाँ अगर आप बॉटम 2 में रहते हैं तो आपको घर का रास्ता नापना पड़ता है। Absolutely, that's the worry for the teams who have not started off great. But then, as we say, a lot of things are changing. This is just the initial phase of the edition of monsoon season. Things might change very frequently. If you learn from your mistakes, what you have done in your previous match, there are possibilities that you can rectify those mistakes and win the match. और अभी मुकाबला शुरू हो उससे पहले कुछ क्लीन अप किया जा रहा है। चलिए क्लीन अप जितना अपना समय ले, हम समय देते हैं काउंटडाउन को और 10 सेकंड की गिनती के बाद मुकाबले को शुरू करेंगे राधिका। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से फैन कोड के ऊपर। आप मौजूद है टडोबा टाइगर्स, उनके सामने पेरियर पैंथर। ये जो ऑरेंजिश कलर की जर्सी है ये टाइगर की है। विसल का इंतजार किया जा रहा है। विसल के साथ पहली रेड, अगली आवाज राधिका की। Yes, the first raid is from Tadoba Tigers. We did expect Arjun Rati to start off, but this is Ranjan for us, who is been supporting Arjun Rati, but I think he should put up his socks and look at how beautifully, how quickly he gets the point. He did not even let the defense set. अच्छी शुरुआत कर ली। वहाँ निगाहें डालते हैं एक्शन में क्या कुछ हुआ। कॉर्नर के खिलाड़ी को टो टच करा, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे मौजूद थे। इससे पहले कि भाप पाते हैं एक्शन में क्या कुछ हो रहा है, मैच से बाहर जाने का उनको निर्देश मिल गया। डिफेंस यहाँ पे 7 का है, हाउसफुल, इसका मतलब बोनस आपके लिए एक्टिवेट है। ये देखिए वो स्वाइपिंग लगातार जो है ना वो दूसरी तरफ की जा रही है राधिका। सपोर्ट स्टाफ भी काफी एक्टिव। Absolutely, because a blink of an eye things would change in kabaddi, so everybody need to be physically, mentally alert here, and this is Akshadul for us. It's just trying to analyze how the defense setup is of Tadoba Tigers. टडोबा टाइगर्स जिन्होंने अपना खाता खोल लिया है, वहीं पेरियर पैंथर्स की पिछली जो रेड थी वो खाली गई थी। अर्जुन राठी यहाँ आए हैं, निश्चित तौर पे 2 अंक कम से कम लेकर जाएंगे और ये ऑफिशियल कंफर्मेशन कर देते हैं। नंबर 4, नंबर 8 2 खिलाड़ियों को मैच से बाहर जाने के लिए कह दिया गया है। 4 नंबर पर रवि खत्री है, नंबर 8 पे हर्ष आपको नजर आएंगे ठेठ दूर, वहां लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन छोड़ के आए थे राधिका। That was as smooth as a butter. How quickly was that of a dubki skill to be executed? Well done. And this is a different kind of bonus skill we have seen, and these bonus skills are so important. When you face towards the midline, there are possibilities that you not only cross the bonus line, but also somebody who comes to defend you, you might as well touch them. चलिए पहला पॉइंट पेरियर पैंथर की तरफ से भी आ गया। 4 का डिफेंस है। उदित लोहान रेड करने के लिए आए हैं, पहली ये इनकी अभी तक की रेड है और अच्छी चीज इनकी टीम की तरफ से ये है कि अर्जुन राठी रेड करके गए थे, पॉइंट लेके गए। उसके बाद रंजन चौधरी रेड करने के लिए आए, वो पॉइंट लेके गए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, मोमेंटम है, वो आपकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। लेकिन उदित एम्प्टी से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ तो। It's a slow start for Periyar Panthers, but then this is Arjun Pandit, a tall raider, looks for a kick, but then again looks for a bonus. I'm not sure if the red foot was on the air. No, it's not. So the next raid, Ayush, would be a do-or-die raid for the Panthers. बिल्कुल सही आपने फरमाया, वो डू और डाई रेड होने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप 2 से ज्यादा एम्प्टी रेड लगा नहीं सकते। 4 का डिफेंड है, एंकल होल्ड करने की कोशिश की गई। क्या पेरियर पैंथर के विजय धुल से यहाँ चूक हुई है? बिल्कुल हुई है। मैच छोड़ के जाना पड़ेगा। अर्जुन राठी के खाते में 3 अंक हो जाएंगे राधिका। I mean, you might have studied his footwork. You just can't go for a solo tackle when he is strong enough in escaping.
In the first raid itself, here we have seen him escape through one of the chains, and he's got through the dupki. Now when he is good at that escaping skills, you just can't go for a solo tackle. Those are the small little things, Ayush. The team should be well prepared before entering the match. और यही मुझे लगता है कि एक प्रॉफिटेबल चीज़ होती है जब आपके सहयोगी कमेंटेटर ऑलरेडी उस गेम को खेल चुके हैं, तो खेल की बारीकियां जो है वो आपको आराम से बता सकते हैं। बहरहाल ये देखिए, ये परस्यूट करने का प्रयास किया था और चलता बना किया वहां डिफेंडर को राधिका। Absolutely. I mean, this was an easy point for them, but then Arjun Chaudhary, nice combination for the Tadoba Tigers, but then they're still looking for their first win. You have one of the strongest raider in your side, which is Arjun Rati. His score rate is nearly close to 70% of his strike rate. So you need to able to support that strong raider to achieve those victories which you are looking for. चेतन साहू रेड करने के लिए आए थे और पेरियर पैंथर को एक अंक दिलाकर जाएंगे। आमतौर पे परफॉर्मेंस आप देखेंगे वो ओवर के जरिए चेतन को सब्स्टिट्यूट किया गया। सब्स्टिट्यूशन पहले के 5 मिनट में राधिका आमतौर पे हमें देखने को मिलता नहीं है। Provided looking at the opponent team defense, if your team is struggling in that wing, you might as well change. If your left flank, look at these escaping skills this raider has. Arjun Rati, I'm sure there is a little pain, but nothing to worry. We have a physio partner to help them out. But then this is Arjun Rati here, and how swiftly he cracks the defense. मुझे लगा संदीप सैनी से थोड़ी सी चूक हुई थी। संदीप सैनी पहले चेन तोड़कर फ्रंट ब्लॉक करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मिसगाइड कर गए, उसी के चलते यहाँ चोट मुझे लगता है अर्जुन राठी को। यूईएम हमारी जो फिजियो पार्टनर है वो मदद करते हुए नजर आएंगे। टीम के कोच सुरेंद्र सिंह, दोनों ही कोचों की जो टेंशन है वो थोड़ी सी ऊपर नजर आएगी, विशेषकर जब अर्जुन, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा अंक लेकर आते हैं राधिका। Now, normally what happens is, absolutely Nitin Kumar, who is the coach of the Tadoba Tigers, looks concerned because Arjun Rati, their lead raider, if he is, in pain and he's not able to give 100%, it would be a blow for the team. So I'm sure our physio partners would definitely be there to help them out because they are available 24/7 in the ground. और मैट के पास से चेतन साहू बातों ही बातों में एक और अंक चुरा के ले गए हैं। टच का 1 पॉइंट मिलेगा, पॉइंट का 2 अंकों का होगा इजाफा। ये देखते हैं रिप्ले के अंदर, जर्सी नंबर 7 को उन्होंने जाते जाते टच किया था और टडोबा टाइगर्स के खिलाड़ी को दिनेश नरवाल वो थे जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रंजन चौधरी 4 का डिफेंस सबसे टफ है ये राधिका। Now it is not only tough for him, but the mindset of Periyar Panthers would be a bit more positive now because Arjun Rati is a kind of injured, and look at the confidence and the scores. Even Steven at 6-all. The right cover goes in perfectly on time for a block, and the rest of the teams finishes off the task there. ये तकनीकी मामला है, आपकी टैक्टिक्स और आपकी स्ट्रैटेजी वो बहुत सही होनी चाहिए। दोनों ही टीम 6-6 के ऊपर आ चुकी है। और तकनीक की बात करते हैं, फैन कोड के ऊपर जब आप मौजूद हैं तो राधिका आपको एक्स्ट्रा फायदा ये मिलता है कि अब इस मुकाबले से हमारे पास ऑफिशियल प्लेयर्स के रिव्यू भी है। यदि प्लेयर्स को लगता है कि हमें रिव्यू लेना है वो रिव्यू ले सकते हैं और एक अनसक्सेसफुल रिव्यू आपको दिया जाएगा। यदि आपने वो रिव्यू गमाया तो उसके बाद वापस मौका मिलेगा नहीं। एक हाफ में एक अनसक्सेसफुल, यानी कि एक मैच में 2 अनसक्सेसफुल रिव्यू। कैसे लग रही है अब आपको ये स्ट्रेटजी राधिका? I mean, this is one of the most important things because when you are watching the live match, I understand the referees are watching it live, but sometimes there would be margin of errors that would happen. The teams might come back and say it was a referee's decision that we went wrong, but then to strike off that little margin, we have come up with the team reviews. They can go for 1 unsuccessful review per half, which is a good one for both the teams and also for the referee staff too. When you talk about the good games, the best part is that Arjun Rati is back in the game. Oh, sorry,
अर्जुन राठी जो है वो वापस एक बार मुकाबले में आ चुके हैं। उनकी जो इंजरी का कंसर्न है वो अब सही हो चुका है। अच्छी खबर यदि आप टडोबा टाइगर्स के नजरिए से देखें, ये सुपर टैकल की सिचुएशन है। चेतन साहू को झांसे में ले लिया गया है और 2 अंक मिल जाएंगे टडोबा टाइगर्स को। नेक टू नेक ये मुकाबला चल रहा है और रोमांच अपने चरम पे। बैक किक करने की कोशिश थी, जर्सी नंबर 6 को फ्रंट ब्लॉक मिला और फिर पूरा कॉम्बिनेशन टैकल। तीनों के तीनों खिलाड़ियों ने दहाड़ सी लगाई और चेतन को मैच से बाहर का रास्ता दिखाया। Absolutely, first super tackle for Tadoba Tigers in this match today. But then Arjun Rathi, that was on the line. You can't just confirm it was an on the line bonus attempt, so nothing given. I think this is the first time he went, out empty-handed. Ayush. बिल्कुल, और यही भूमिका रही है ना अर्जुन की कि अपनी टीम के लिए तो लगातार वही पॉइंट ला रहे हैं और कोई लेकर आ नहीं रहा है। यहाँ पर डबल एंकल होल्ड कर ली गई है और चारों खिलाड़ियों से जद्दोजहद कर अजय पंडित नेट के बाहर चले जाएंगे। पूरी कोशिश की थी लेकिन टडोबा टाइगर्स की ये जो रेड है अगली आने वाली वो भी डू और डाई हो सकती है। राधिका, अगली आवाज आपकी। Himanshu, the right corner defender, what a perfect tackle. But then I should appreciate the support coming in from the far end. That was good enough, and there's a do or die rate. 1 versus 5. It would be not so easy for Ranjan Chaudhary. And that dive tackle, if it would have been on a single ankle, it would have been a successful raid. But then he went on for both the ankles, so the momentum is broke straight away. लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े थे, अपनी पोजीशन में से चेन तोड़ी और फिर डबल एंकल होल्ड जिसकी आप बात कर रही थी राधिका की। यदि आप एक पांव पकड़ते हैं तो फिर बच सकता है। वहां पर जो रेडर है उनके पास मोमेंटम रहता है, दूसरा पांव होता है जो जमीन से वो फ्रिक्शन जनरेट कर लेता है। लेकिन यदि आपके दोनों पांव पकड़े जाए तो फिर आसान नहीं होता पार पाना। 4 के डिफेंस में अक्षित दुल गुज चुके हैं। 9-9 से मुकाबला अभी जो है वो बराबर चल रहा है और पेरियर पैंथर की तरफ से दुल साहब ने अभी तक 2 अंक निकाले हैं। Now it would be next few minutes would be a lot of calculative game here. Even Arjun Rathi like players would not risk it, unless they have the momentum in their favor. I somehow still feel he has some sprain in the knee. लेकिन उसके बाद में भी वो बैक किक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, परस्यू कर लिया गया और एक बार फिर आपको शायद चेतन नजर आएंगे, उनको वापस भेजा जाएगा। वापस भेजा गया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है राधिका। Absolutely, because we could see that sprain. This is for 40 days, so definitely a player like Arjun Rathi should be available for maximum number of matches for the team Tadoba Tigers. So initially, if you are struggling, just give that break and get yourself sorted. और मुझे लगता है एक और कारण ये भी हो सकता है कि शायद अपने डिफेंस को थोड़ा सा और स्ट्रांग किया जाए या ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले किसी खिलाड़ी को भेजा जाए। यहाँ 4 का डिफेंस है, चेतन साहू उसके अंदर घुस चुके हैं। 9 मिनट 17 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी। क्या 2 शिकार बनाए हैं या एक शिकार मिला है? नंबर 7 के रूप में टडोबा टाइगर्स के ये जो इनफैक्ट दिनेश नरवाल थे उनको बाहर जाना पड़ेगा। That was the right timing, but the angle went wrong. He was rather than concentrating on his own tackle, he was looking for support before he goes for the initiation. That was, one of the wrong steps that the defense has done. Now, when Arjun Rathi, he's being taken care by the Department of Physiotherapy under the University of Engineering and Management, Jaipur. Our physio partners who are readily available. I'm sure he should be back on the mat very soon, Ayush. बहुत जल्द हम भी उम्मीद करते हैं। इनफैक्ट कोई भी टीम क्यों ना हो, इंजरीज जो है वो कंसर्न हमेशा रहता है जब बॉडी टच गेम होता है। तो वहाँ यदि आपको सही समय पर सही उपचार मिल जाए का मतलब ये है कि आगे के मुकाबले आप खेल सकते हैं। हर्ष सिंह जो आमतौर पर अपनी टीम के लिए रेडर की भूमिका निभाते नहीं हैं और पेरियर पैंथर्स की तरफ से इस कॉर्नर के खिलाड़ी को रेड करने के लिए आना पड़ा। डू और डाई की सिचुएशन से पहले एक बार फिर राठी को भेज दिया गया। राधिका, क्या लगता है आपको कि करो या मरो की स्थिति में सफलता दिखा पाएंगे? They are also on the verge of just 3 people there, and if you don't have multiple options who can survive in the do or die raid, so unfortunately this has to be Arjun Rathi. Though he struggles, he gets it. Look at the footwork. I think this would definitely fill up some josh in him. 1 point, Tadoba Tiger, number 4 out.
एक अंक तड़ोबा टाइगर को। अर्जुन राठी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है नहीं, लेकिन उसके बाद में भी मुकाबले में जान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको लग्जरी नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलिए कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा। चेतन साहू सबसे ज्यादा पॉइंट आज के मुकाबले में पेरियर पैंथर्स के लिए लाए हैं, स्ट्रगल में फंस चुके हैं और डिफेंडर्स जो है वो एकजुट होकर इनको मैच से बाहर डालेंगे। It should be each 1 point. Yes, it should be each 1 point because the support has come in very, very quickly. Look at the force which the defense has come from the right wing, but then the raider was still in the lobby, but the defense went out there. अद्भुत थे वो दृश्य और अद्भुत थी आपकी आंखें जो उनको भांप पाई उस रफ्तार के साथ। यहाँ रेडर आउट है, यहाँ कोई खिलाड़ी लॉबी के बाहर नहीं गया, ये मैं भांप सकता हूँ। एक अंक इस बार पेरियर पैंथर्स की साइड चला जाएगा। Yes, it's just still neck and neck match. This is very interesting, and again a super tackle opportunity for Tadoba Tigers to get those 2 extra points if they be able to pin down this raider and a revival too. But then will they get it? No. This is number 3 jersey defender of raider who is claiming a point. That's Arjun Pandit who gets a point from the left flank of the defense. टडोबा टाइगर्स की यदि आप बात करें तो उनके लिए डिफेंस के अंदर पॉइंट सिर्फ पंकज शर्मा लेके आए, 3 पॉइंट उन्होंने क्लेम किए, और क्योंकि वो मैट के ऊपर थे नहीं, इतना आसान वहां था नहीं रेडर को रोकना। उदित लोहान रेड करने के लिए आ चुके हैं टडोबा टाइगर्स की तरफ से। अभी इस मुकाबले में एक भी अंक इनका था नहीं, एक अंक और होगा भी नहीं इस रेड में तो कम से कम। पेरियर पैंथर्स 13 से बढ़कर जा पहुंचेगा इनको स्कोर 14 की तरफ। Now the team is well prepared, looking for that all-out points that they will easily get it. The raider, he is just waiting for the referee to give him a signal so that he gets in. Yeah, he gets in, gets a point. He doesn't want to waste any more time now. Tadoba Tigers all out, they get back to all in. So it's a 1 touch point and 2 for the all out. So total 3 points awarded for Periyar Panthers. Look at that. I feel so sorry for Arjun Rathi. He is one of the most prominent raiders in your team, and if he is struggling, the morale of the team would definitely go down, Ayush. राधिका, इसी के ऊपर हम लगातार चर्चाएं करते नजर आते हैं, चाहे कोई भी मुकाबला क्यों नहीं हो, कि यदि आपका एक ही खिलाड़ी पॉइंट ला रहा है, उसी के ऊपर आपकी निर्भरता है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मैचेस जिता सकता है। लेकिन युवा कबड्डी सीरीज जितने बड़े स्तर की सीरीज को जीतने के लिए आपको मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए जो आपके लिए लगातार परफॉर्म करते हुए नजर आए। राधिका, Absolutely, as we say, when you try get your team combinations right, that is where you win half the battle. Rest half is done on the mat. If you are over dependent on one player in a contact game like this, anything could happen any day. यहाँ फिर एक बार मैच की कसमें खाई जा रही है। अर्जुन ने पॉइंट की क्लेम किया है, ऐसा वो मांग कर रहे थे, माना गया है नहीं। चेतन साहू अगली रेड करने के लिए आए हैं, मल्टी पॉइंटर रेड होके जाएगी। 200 कम से कम शिकार बने हैं, गिनती कर लीजिए जी, 2 शिकार दिए गए। नंबर 6 को शिकार दिया गया जो कि हिमांशु रावत है, 1 अंक डिफेंस के अंदर लेके आए थे, लेकिन यहाँ उनका डिफेंस चला नहीं। कवर के दोनों ही खिलाड़ी हिमांशु और उदित लोहान, इनफैक्ट विशाल सिंह शायद मुझे लगा कि उन्होंने प्रहार किया था। Now I guess Arjun Chaudhary should step up. He just got 1 raid point, which is not fair enough for the reach he has. And look at the combination, how swift and lethal that was, Ayush. It was a risky tackle. Looked like he might run away with multiple points, but then the support came in so strong. The back hold was good enough. ये जब पहली बार उन्होंने अपना हाथ स्ट्रेच किया था, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मिड लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन जो डिफेंडर्स है पेरियर पैंथर्स के, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, इतनी आसानी से अंक हम जाने देते हैं नहीं। चेतन साहू अगली रेड करने के लिए आ चुके हैं, पेरियर पैंथर्स की तरफ से सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं, 9 अंक ले जा चुके हैं। क्या ये सुपर 10 कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। पहले ही हाफ में अपना सुपर 10 कंप्लीट कर लिया चेतन साहू ने। राधिका, this is what happens, when nothing is working in your favor, you will tend to do more mistakes. That is what is the, frame of mind is for the Tadoba Tigers right now. When Arjun Rathi is injured,
at least, the defense is trying to do something, but they are not 100%, trying to put their effort there. This is Arjun Rathi yet again with the 7th rate point. उस इंजरी के बावजूद भी अर्जुन के ऊपर निर्भरताएं जो है वो कम नहीं हो रही है। वहां पर टडोबा टाइगर्स की पेरियर पैंथर के विजय धुल को वो मैच से बाहर लेके जाएंगे। पिछला जो प्रयास था वो उनके लिए काम आया। 3 मिनट से भी कम का समय बचा है और ये जो स्कोर है ये देख लीजिए, एक तरफ 21, दूसरी तरफ 12 नंबर्स जो है वो पूरी तरह से टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। 4 का डिफेंस घुस चुके हैं अक्षय धुल। अगली आवाज राधिका की। After the all out, they are still on the verge of only just 4 people on board for Tadoba Tigers. This one more all out would be an assault for the Tadoba Tigers. Now look at Arjun Rathi. Every single time he is the one the team would be looking for. I think he had a sprain in the right knee, but then he is a left raider. That's a good one that he is a left raider. At least he has an opportunity to go for those running hand touches, but the back line and he looks for a kick, but nothing given. राधिका, मुझे जो मुश्किल का सबब नजर आ रहा है टडोबा टाइगर्स के लिए वो ये है कि अर्जुन रेड करने के लिए जा रहे हैं, वो सिंगल पॉइंट्स की रेड लेकर आ रहे हैं। वहीं जब चेतन साहू रेड करने के लिए जा रहे हैं, ज्यादातर वो आपने देखा होगा कि वो मल्टी पॉइंटर रेड ला रहे हैं। इसी के चलते टडोबा टाइगर्स के मैट पे से खिलाड़ी लगातार कम होते जा रहे हैं। Arjun Rathi is kind of a player, Ayush. He knows the counter action skills. So that's the reason he's kind of an escape artist, we would say. But when the opposite team try and understand that you are gaining points only through escape, the team would not, give away multiple points. They might at least look for the solo tactical, or they just leave it as always. So this is what is happening, I guess, with Arjun Rathi coming into raid. Look, no other team defense come to support. बिल्कुल सही आपने कहा, सपोर्ट कुछ मिला नहीं। यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, तीनों को अंदर लाया जा रहा है, विशाल सिंह को बाहर भेजा जा रहा है। सब्स्टिट्यूट जो है वो लगातार किए जा रहे हैं टडोबा टाइगर्स के तरफ से। When you have only reliable on only one player as a raider, when you're not playing on the mat, when you have the coaching happening after the match and all, the team should analyze, who is your best bench strength, who can compensate the other raiders. That is the kind of homework the coaching management need to do. दिनेश नरवाल को बैक किक करने की कोशिश थी, जाते जाते दूसरे कॉर्नर को भी टच करना चाह रहे थे, लेकिन एक पॉइंट जिसकी दरकार पैंथर्स को थी वो उनको मिल चुका है। 23 अंक से ये एक आसान सी लीड, इनफैक्ट 10 अंकों की ये जो लीड है वो बनाकर बरकरार रखे हुए हैं। अर्जुन राठी एक बार फिर रेड करने के लिए आ चुके हैं। टडोबा टाइगर के ट्रम्प कार्ड है ये खिलाड़ी, इनफैक्ट एक ही कार्ड है इस टीम के पास, मुझे लगता है वो अर्जुन राठी है, क्योंकि बाकी रंजन चौधरी महज 1 अंक निकाला, 8 है अर्जुन राठी के। राधिका, I mean, he is just looking at the clock whether to go ahead, but then looking at the clock, I think he thought, let me finish off the raid, finish off those 30 seconds, go back empty-handed, but then the team did not let him do so. That was a perfect dash, a follow-through dash coming from the cover. और डैश किया किसने? चेतन ने, जो रेड में लगातार अपने टीम के लिए पॉइंट लेकर आ रहे थे, अब डिफेंस में भी अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो ये एक अच्छा फाइंड मुझे लग रहा है कि हो चुका है आज यहाँ पेरियर पैंथर्स की तरफ से। यदि बात करेंगे चेतन साहू, नाम नोट कर लीजिएगा, टैकल में इन्होंने 1 अंक निकाला, 12 अंक इन्होंने रेड करते हुए लिए हैं, 13 अंक एक हाफ में, जो 14 अंक तो वहाँ टडोबा टाइगर्स के हैं, यानी कि चेतन से सिर्फ 1 ज्यादा अंक गेन किया है राधिका टडोबा टाइगर्स ने। Absolutely, and if you look at the defense also, and looking at the highlights, initially, this was a beauty to watch. He went for that dupki and got those multiple points on board. Later also, he's got those multiple points yet again. But then here is the point where he's got that injury, after which the game pace went on in favor of the Periyar Panthers. They've got the momentum, they've got the confidence when Arjun Rathi was injured. और उसके बाद में चेतन साहू, ये वो खिलाड़ी जो रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन के दौर पे आया, लगातार मुश्किलात का सबब बनते हुए जा रहे थे। रेड पे रेड से इन्होंने डाली थी, 12 रेड, और एक बार ऑल आउट की तरफ जो है वो धकेलने में कामयाब भी रहे थे टडोबा टाइगर्स को। तो जिस शुरुआत की आवश्यकता थी टडोबा टाइगर्स को अंक तालिका के अंदर पहला पॉइंट लाने के लिए, कम से कम पहले हाफ में वैसी शुरुआत इनकी रही नहीं। जो रेडर जा रहे थे अर्जुन राठी के अलावा इतनी आसानी से पार पा नहीं रहे थे, और फिर ये अंत का डैश
अंतिम के कुछ 2 सेकंड बचे थे पहले हाफ में, वहां अर्जुन राठी को डैश कर दिया गया और उनकी उम्मीदों के ऊपर एक बार पानी फेरा गया। राधिका की आवाज में मैच की समरी पहले हाफ तक। Yes, so looking at the first half, 20 minutes, Tadoba Tigers are on 14, Periyar Panthers on 24. Look at the rate points, the difference. That is the most rate points difference we have seen because, Arjun Ratty was injured. Tackles, not so big of a difference. They have got one all-out points for Periyar Panthers. Looking at the struggle Arjun Ratty is, but I'm sure in the next 20 minutes we will see a better version of Tadoba Tigers. We'll go into a quick breather here, but we'll be soon back. Stay tuned to us on FanCode. Welcome back. Yes, we have seen, there is a 10 points favor of Periyar Panthers here. The Raiders have done phenomenally well, especially when we talk about a substitute rate coming in, chipping in those rate points. Chetan Sahu is the star of the first half, we should say, Ayush. And let the whistle blow. We'll have the next 20 minutes to see whether Periyar Panthers will run away with their second victory for the edition now, or will Tadoba Tigers get their first victory? बॉलीवुड से एक नाम याद आता है, छोटा चेतन बड़े कारनामे, और यहाँ बड़ा कारनामा चेतन साहू अपने टीम के लिए करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये सुपर टैकल की सिचुएशन है, 3 खिलाड़ी मैट के ऊपर। अजय पंडित रेड करने के लिए गए, फ्रंट ब्लॉक करने का प्रयास, उसके बाद थाई होल्ड। क्या अपनी रेड को, अपनी कैंट को इस्तेमाल कर पाएंगे, या कैंट जो है वो तोड़ दी जाएगी टडोबा टाइगर्स की तरफ से? चलिए, रेडर जो है वो आउट है। सुपर टैकल, 2 अंक मिल चुके हैं और अजय पंडित के रूप में राधिका। I mean, that was a good one. A dive came in properly. But then, when the support defense goes in parallel to the raider, it would not help the defense. That would, I'll say, just go opposite to the raider. Only then you'd be able to block his weight reaching the midline. Here, they were lucky enough to get those, super tackle points and a revival too. But then, this is the basic rule, Ayush, that, when you go for support, just go facing opposite to the raider so that he does not reach the midline. वो जो मोमेंटम है उसको तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ रंजन चौधरी रेड के पे गए थे, उसके साथ में अक्षय धुल आई है। चलिए, ग्राफिक्स का जो काम है वो लगातार ग्राफिक मैन का बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। ये सारे के सारे रेडर, छोटी छोटी सी रेड हो रही है। जब तक स्विचर स्विच करते हैं, खिलाड़ी स्विच हो जाता है। उदित लोहान रेड करने के लिए आए, फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश और डैश कर दिया गया। जर्सी नंबर 6 में हिमांशु रावत अपना चौथा पॉइंट निकालते हुए। पेरियर पैंथर का डिफेंस अब सर चढ़कर बोल रहा है राधिका। I mean, when you have your Raiders working, the defense will also definitely have that confidence in you. Look at how solo tackle went on from the right corner. Again, a super tackle opportunity. This is the star of the first half, Chetan Sahu. Yet again, an outward turn, moves in swiftly towards his own. So this is point number 13 for Chetan Sahu. Well done. क्या यहाँ टडोबा टाइगर्स एक और ऑल आउट के करीब जा रही है? 2 खिलाड़ी मैट के ऊपर मौजूद है। अब उनकी रेड की बारी है। क्या उनका कोई विशेषज्ञ रेडर रेड करने के लिए जा सकता है? रेड करने के लिए राजन गए हैं। इनके अटैकर है ये, यानी कि रेडर है। रेड करने की क्षमता इस खिलाड़ी के पास, भले ही आज के मुकाबले में महज 1 अंक इनका आया है। इनकी पोजीशन में डिफेंस करते हैं या रेड करने के लिए गए हैं। एक खिलाड़ी को कवर के खिलाड़ी को टच करने की कोशिश की, एक बोनस लेके आए हैं और एक जर्सी नंबर 4 के रूप में वहां पर मौजूद अपने को भी बाहर भेजेंगे।
though you are leading Periyar Panthers, you just can't, just lie down normally. They thought, he has taken the bonus point, he might go away empty-handed. That's the reason they were not so alert, and that advantage, Tadoba Tigers Raider has taken it. Yet again, a super tackle opportunity, but then the defense faltered. And look at the line jump we have seen. अद्भुत वहाँ पे जंप लगाया था रंजन चौधरी। 3 अंक इस मुकाबले में अभी तक कमा चुके हैं। यहाँ समय रहते मुझे लगता है या तो डैश कर दिए जाएंगे। वो अपील कर रहे हैं कि मैंने जो मिड लाइन है उसको पार कर लिया, और टडोबा टाइगर की इस अपील को स्वीकारा भी गया है। Absolutely, Tadoba Tigers gets a point because the defender anti-crossed the line, the mid-line. So the defenders need not step on the mid-line when they are in the tackle. So good point, the Raider would be safe there. Number 11 in, 1 out. इसी बीच सब्स्टिट्यूशन किया गया, और सब्स्टिट्यूशन के चलते यहाँ चेतन साहू रेड करने के लिए आ गए। डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश की, ये तो किक्स लगा रहे हैं, आराम से पार पा जाएंगे। 2 पॉइंट मिलेंगे। जर्सी नंबर 7 टडोबा टाइगर के लिए खेलते हुए नजर आते हैं आपको आमतौर पर दिनेश नरवाल जी, वही खिलाड़ी है। और उसके बाद में 9 को भी उन्होंने किक कर दिया था। 9 की पोजीशन पे पंकज शर्मा थे, तो यानी कि पंकज शर्मा जिन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट डिफेंस में लिए हैं, उनको अब मैच छोड़ के जानी पड़ेगी। अकेला खिलाड़ी टडोबा टाइगर्स राजन, इनके ऊपर भूमिका। यदि यहाँ ये बाहर चले जाते हैं तो ऑल आउट एक और बार फिर टडोबा टाइगर्स का, लेकिन बोनस पॉइंट मिला और ऑल आउट के चलते 3 अंक पेरियार पैंथर्स को राधिका। Now, the fall, Tadoba Tigers have got ample opportunity to go for those super tackles. They have got it 4 times, but they haven't utilized it to the max. That's what they faltered. And yet again, going parallel when you're going for a support, that turned out advantage to the Raider, and he gone away with those 2 points. Where you have left with single point, and then you have lost those all-out points again. Now, after a while, we are seeing here Arjun Pandit. Will he be? No, this was not Arjun Pandit. I'm sorry. This is Arjun Rathi. Goes for the bonus. He gets it. अजय और अर्जुन नाम बहुत करीब, लेकिन इन दोनों के बीच में फासला बहुत ज्यादा। अर्जुन राठी लगातार पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा मुश्किलात का सबब अजय फेस कर रहे हैं। चेतन जो है वो मुश्किलों से बड़े दूर रहते हैं। मुश्किल तो है सिर्फ विपक्षी के लिए। टडोबा टाइगर्स को 1 और अंक का नुकसान होगा। पेरियार पैंथर्स अपने नाम वो कर लेंगे। चेतन वो खिलाड़ी थे जो सही समय पर ये पॉइंट लाए, हवाई छलांग मारी और एक अच्छा एस्केप। 16 rate points to him. He's been just tackled twice. He has, got 1 tackle point as well. Why was he on the bench to start off with, Ayush? When you have such brilliant talent sitting on the bench, I think this has got the right opportunity for him to prove himself. बिल्कुल राधिका, मुझे ऐसा लगता है कि पहले के 1 मिनट में उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, और वो जो कोच है वो शायद भूल गए थे कि अरे चेतन भाई तू यहाँ बैठा है, चल चल सब्स्टिट्यूट करके तेरे को मैच के अंदर भेजते हैं, और वो कारनामा जिसकी दरकार है वो करके दिखा दीजिए। बहरहाल जोक्स अपार्ट, एक और सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। मैं हमारे सभी दर्शकों को फैन कोड पे ये बता दूं कि ये जो प्रोडक्शन आपकी तरफ से आपके तहत पहुंचता है, तो वो सिर्फ हम कमेंटेटर्स अपनी आवाज़ नहीं देते, एक बहुत बड़ी टीम होती है। हमारे कैमरामैन आपको प्यारे प्यारे से एंगल्स दिखाते हैं, स्विचर होते हैं, वो लगातार स्विच करते हैं कैमरा एंगल्स को। डायरेक्टर की कमांड के ऊपर सब कुछ चलता है। हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे कंटेंट हेड वो सब डिसाइड करते हैं कि क्या कुछ और किस तरीके से दिखाया जाएगा। हमारे ग्राफिक्स मैन ये प्यारे से खूबसूरत से ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर लाते हैं, और पॉइंट चेतन किस तरह से चुराते हैं ये देखिए। ग्राफिक की बात की, ग्राफिक मैन ने कहा चलिए जनाब जलवा दिखाता हूँ। टोटल रेट 15, रेट पॉइंट टोटल रेट जो है वो 15 मारी है, रेट पॉइंट जो है वो 17 लगाए। सुपर रेट नहीं लगाई, लेकिन फिर भी गुच्छों में अंक लाए राधिका। I mean, I love it when it's not a super raid. That shows the real caliber of a raider. When you are playing on your own strength rather than the weakness of the defense. Those are single points, the toe touches, the kicks, the running hand touches. I think that is the beauty of the raider rather than, going for those super raids. The super raids would come, if the defense falters. But then if you have your own strength, those would be the solo raid points. 2 points, Periyar Panther, number 7, 9 out. चेतन साहू 2 और पॉइंट लेकर आ गए, और किनको आउट किया? दोनों ही कॉर्नर के खिलाड़ी को। दिनेश को बाहर भेजा, पंकज को बाहर भेजा। दिनेश का प्रदर्शन आज बड़ा ऑर्डिनरी रहा है राधिका, एक भी पॉइंट वो अपनी टीम के लिए लेके नहीं आए। क्यों उनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा रहा? कॉर्नर की पोजीशन बड़ी महत्वपूर्ण होती है।
I mean, I'm not sure. I mean, the coaching staff, they should analyze, they should have plan A. And if plan A doesn't work, they should have a plan B too. You have multiple options to substitute your players every now and then. So you should try and play the right cards at the right time. चाहे आप रेडिंग कह लीजिए, चाहे डिफेंस कह लीजिए, टडोबा टाइगर्स की कहानी आज सिर्फ प्लान ए ही रही है। चाहे चले चाहे ना चले, रेड करने के लिए प्लान ए उनका होता है अर्जुन, और फिर वो देखते हैं प्लान बी कहाँ है, कहीं नहीं है, लेकिन विरोधी के पास बहुत है। चेतन साहू और अंक लेकर आएंगे 2। ये तो 2 का पहाड़ा पड़ रहे हैं। इफ आई वांट टू टेल यू, राधिका इज जस्ट काउंटिंग इन 2 एट द मोमेंट। I mean, look how beautifully he is escaping. He understands the geography of the match. So impressive that is, Ayush. And meanwhile, Arjun Rathi also scores his super 10. Well done, mate. But then I'm sure you need much more support from the team. Now, as we say, we have an opportunity to look for those reviews. If you're not successful, if you're not happy, so this is what is taken. Save 2 points. But team challenge, Tadoba Tiger, red route. Please review. चलिए, Now Arjun Rathi ये क्लेम किया गया है कि जो रेडर है उन्होंने जी राधिका, Yeah, go ahead, Ayush. चलिए पहले आप करते करते देर ना हो जाए। रेडर ने 2 अंक लिए हैं, ऐसा ऑफिशियल ने क्लेम किया, लेकिन फिर टडोबा टाइगर ने मांग की है कि हमने रेडर को रोक लिया है, हमें रेडर आउट दिया जाए, तो इसी के लिए वीडियो रेफरल पे गए हैं। Now let's analyze in the replay what happened. Look like the outward momentum of Chetan did went out of the court for one moment. If we have another opportunity to look at what happened, we should be able to give a verdict. I'm sure the referee staff is also looking at one. But when he Ayush, when he turned outward, like both the feet was off the court. Review unsuccessful. No, review was unsuccessful. That's what the referees say. The first decision remains, and Tadoba Tigers loses their review too. चलिए, आज ही से हमने रिव्यू का इंट्रोडक्शन किया था, और ये जो शुरुआत है ये रिव्यू के खाते में इतनी अच्छी गई नहीं है। पहला रिव्यू ही गंवा दिया टडोबा टाइगर्स ने। 12 मिनट 29 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी। अर्जुन राठी इनका एकमात्र ट्रम्प कार्ड, इनफैक्ट चाहे आप इनका एकमात्र तीर कह लीजिए, वो मैच के ऊपर छोड़ा गया है। बोनस पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर आए, लेकिन मैच पे 2 खिलाड़ी टडोबा टाइगर्स की तरफ से। सुपर टैकल की सिचुएशन है, रेड करने के लिए आपको कौन खिलाड़ी मिल रहा है? नंबर 5 यानी कि चेतन। Now Chetan should eye on Arjun Rathi itself, because Arjun Rathi is not a defender, remember. And look at that, Arjun Rathi fumbles, and Chetan Sahu, look at that, it's 21 points and counting for Chetan Sahu. How this is 22, point number 22 on Arjun Rathi. How beautifully this player is playing. और इस मुकाबले में तीसरी बार ऑल आउट के एकदम करीब आ चुके हैं टडोबा टाइगर्स। रेड करने के लिए उदय लोहान, ये इनके रेडर है। वो अलग बात है कि आज इनको एक भी पॉइंट नहीं मिला, कल के मुकाबले में भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। और अब जब समय आपके खिलाफ होता है ना, तो विरोधी सर चढ़कर बोलता है, उठाकर जमीन के ऊपर पटका है, और पटक तो नजर आ गई है यहाँ पर पेरियर पैंथर्स की टीम के ऊपर भी। ऑल आउट यानी कि 3 और अंक आप गंवा देंगे राधिका। Absolutely, and this is the 3rd time all out points been awarded for Periyar Panthers. Now looking at the time we have, though we have 11 minutes, but then Periyar Panthers will not look back, not definitely when you have such a tackles happening on the opposite side. Tadoba Tigers, mistakes over mistakes, this is what is doing, they're trying to shorten up the gap, but then they don't think that they are going to do in the next 10 minutes. टडोबा टाइगर्स की रेड है, राजन चौधरी रेड करने के लिए आए हैं, और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई अंक अपनी टीम की तरफ से वो लेकर आएंगे। चलिए, थोड़ा सा चेंजेस पेरियर पैंथर्स ने भी किया। जर्सी नंबर 3 में अजय पंडित को अब रेड करने के लिए भेजा है। बहुत समय हो चुका था, चेतन साहू रेड कर रहे थे, एंकल होल्ड करने की कोशिश थी कॉर्नर की तरफ। जो खिलाड़ी मौजूद है जर्सी नंबर 2 में, टीनू लोहान सब्स्टिट्यूशन के तौर पर आए थे और अपना काम बखूबी निभा के दिखाया है। I mean, both the defenders goes for one ankle hold each, but the first one who holds it gets the point. So how, kind of unfair, but then it's because whoever touches the raider first, he gets the point.
And now this is Arjun Rati for us scoring a super 10, but I'm not sure if he'll be able to get that first victory for the team. राधिका, जो आप कह रही है ना कि दोनों खिलाड़ियों ने पांव को पकड़े थे, लेकिन जो पहला पकड़ता है उसको अंक दिया जाता है, यही तो रोमांच है इस खेल का, कबड्डी के खेल का रोमांच है। रिस्क पहले किसने ली? क्या आप पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे रेडी है कि हाँ मैं रेडर को रोकने की कोशिश करूंगा? यदि आप वो कारनामा कर दिखाते हैं तो आपको अंक भी मिलते हैं। हाँ, तो रेडर एस्केप कर जाएंगे। चेतन साहू, इनके पास सब कुछ है, डुबकी भी इनको लगाना आता है, हवा में छलांग कैसे मारते हैं वो भी ये खिलाड़ी समय समय पे दिखाता है। राधिका, I mean, multiple points is what he is claiming every single raid. You know, he has every ways to escape from the ground. He goes outward, inward, he goes for a dupki, he runs over a chain. You know, every skill he has to escape, and the speed is also brilliant on him. राधिका, एक स्टैट आपको बताता हूँ, हमारे सारे जो दर्शक फैन कोड पे मुकाबले को एंजॉय करते हैं उनको बताता हूँ। 8 मिनट से ऊपर का खेल, लगभग 9 मिनट का खेल खेला जाना और बाकी है। 9 मिनट का मतलब कम से कम आपको 20 से 22 रेड देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि चेतन साहू भी रेड करते आएंगे नजर आपको। 24 अंक उनके हो चुके हैं रेड करते हुए। इस युवा कबड्डी के एडिशन का जो सबसे बड़ा स्कोर है वो 31 है। पहले ये दलील सुन लेते हैं। परियार पैंथर चैलेंज, नो पॉइंट, प्लीज रिव्यू। थोड़े से घबरा से गए थे ऑफिशियल्स, और ये जो चमक धमक, ये जो रोशनी है वो आपके काम को थोड़ा सा और चोटिल करती हुई नजर आती है। यहाँ देखते हैं नो पॉइंट है, ऐसा परियर पैंथर्स ने कहा, क्योंकि जो इनके खिलाड़ी ने चेन तोड़ी थी उन्होंने कोई संपर्क साधा नहीं है। Now Arjun Rati says, you know, though favor went in for Tadoba Tigers, that's the reason Periyar Panthers have taken the review. They say, though we have attempted to tackle, but none of us have come in contact with Arjun Rati there. So let's see what happened. Left cover did definitely bend down. That's what Arjun Rati claims, that he has touched him. Look at this sprain. I'm sure it's not a big one. Sure, he should come back strong tomorrow. इंतजार है ऑफिशियल के निर्णय का। मुझे बड़ा पसंद है वो जब ये देखिए ऑफिशियल की आवाज आप सुनते हैं। Review was unsuccessful. The original decision remains. इसका मतलब यह है कि अब दोनों ही टीमों ने, टडोबा टाइगर्स ने भी और पेरियर पैंथर ने भी अपना जो एकमात्र रिव्यू मिलना है एक हाफ में अनसक्सेसफुल वाला, वो गंवा दिया है। चेतन अगली रेड करने के लिए आ चुके हैं, और रेड में डिफेंस में देखिएगा आप हाउसफुल आपको नजर आएगा। 6 खिलाड़ी, इनफैक्ट एक खिलाड़ी की कमी, लेकिन वो खलेगी इसलिए नहीं क्योंकि बोनस अभी भी एक्टिवेटेड है। डुबकी लगाने की कोशिश की और ये मल्टी पॉइंट रेड जिसके लिए ये जाने जाते हैं, कीप ऑन काउंटिंग। और राधिका की हंसी आपको बता रही है कि ये जो दृश्य है ना, ये मुझसे ज्यादा बेहतर बताएंगी। Now this is the first super raid for this raider. How impressive was that? You know, look at how smartly he takes that dupki. It is a 3-point raid. No wonder. That's the first super raid for him. And I'm sure, as you've been talking about the 31 raid points mark yesterday's match, I'm sure, you know, having that time in, you know, we have nearly 8 minutes. I'm sure he will definitely get there. और यहाँ तो ऐसा है नहीं कि आपको ज़्यादा समय तक बाहर बैठना पड़ेगा। रिवाइवल का जो प्रोसेस है वो लगातार शुरू रहता है। चलिए अगली रेड, 2 का डिफेंस, सुपर टैकल की सिचुएशन, रेड करने के लिए आए हैं चेतन, जो अभी तक यदि पॉइंट्स की बात करी जाए तो अपनी टीम के लिए लगातार चुराते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर यहाँ पर एंकल होल्ड करने की कोशिश की है दोनों डिफेंडर्स का, अद्भुत एफर्ट, और आखिरकार सुपर टैकल में उसको कन्वर्ट किया। जर्सी नंबर 9 के पंकज शर्मा ने अद्भुत कारनामा करके दिखाया है। राधिका, this is tackle number 4 for this defender. Look at how grippy that was. He did not let the raider move even an inch. So that's a good one. That's a super tackle. So 2 points been avoided. 1 revival for Tadoba Tigers. Arjun, that's not Arjun Rati. आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं अर्जुन राठी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि जब अर्जुन आते हैं तो उनकी जर्सी पे ए लिखा होता है, आप अर्जुन मान लेती है। जब राजन आते हैं तो उनकी जर्सी पे आर लिखा हुआ होता है, तो आप राठी मान लेती है। लेकिन आपका आमतौर पे कहना ये कि अर्जुन राठी रेड कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे आप उनके परफॉर्मेंस से। जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट बैक टू द गेम। 3 का डिफेंस, राधिका क्या लगता है कि ये जर्सी नंबर 3 के डिफेंस को भेद पाएंगे? I mean, looking at how Tadoba Tigers' defense was struggling, there is a possibility, but then Periyar Panthers do not want to give away those multiple points. Even that chance is not being awarded for Tigers. यहाँ रेड करी जा रही है, उदित आए रेड करने के लिए, और डिफेंस जो है उसमें आपको चेंज दिखेगी पूरी 3, लेकिन ज़्यादा समय वो लेंगे नहीं, कैंट को पूरा इस्तेमाल करेंगे नहीं, वापस खुद के खेमे में चले जाएंगे और इनवाइट कर देंगे पेरियर पैंथर्स की तरफ से अगली रेड के लिए। जर्सी नंबर 3 में अजय पंडित 3 रेड पॉइंट्स ही अभी तक इस मुकाबले में अपने के लिए निकाल चुके हैं, क्या यहाँ इजाफा कर सकते हैं? सुपर टैकल की सिचुएशन अभी भी ऑन है, लेफ्ट से राइट की तरफ चहलकदमी करते हैं, डबल थाई होल्ड करने की कोशिश की और इस थाई होल्ड से पार नहीं पाएंगे। राजन जो अपनी टीम के लिए अटैक में इतने पॉइंट नहीं ला पा रहे थे, उन्होंने डिफेंस में काम करके दिखाया है। Yes, that was a Rajan Chaudhary who should be a raider, but then when the time came in, he went for that double thigh hold, and the rest of the defense pounced on him. And this is super tackle number 3, if I'm not wrong, for Tadoba Tigers. And this is Udit for us. It's a do or die raid. 5 members in the defense for Periyar Panthers. If you just hold on for those 20 seconds, the raider might just go empty-handed. Red out. 1 point, Periyar Panther. The coaching staff is so happy for Periyar Panthers. चलिए एक बार फिर 3 का डिफेंस है, एक बार फिर धर लिया गया है, एक बार फिर वही 3 डिफेंडर्स अपना काम करते हुए नजर आए। सुपर टैकल, 2 अंक। एक तरफ चेतन जहां 2-2 पॉइंट्स की रेड डाल रहे थे, यहाँ सुपर टैकल करके 2-2 अंक अपनी टीम के लिए टडोबा टाइगर्स कमा रहे हैं। राधिका, Absolutely, this is one of the best things happening for Tadoba Tigers. This situation is turning favorable, but then Periyar Panthers, they can just not do that. When they are doing so well in a super tackle situation, you need not go enter deep in looking for points unless it's a do or die raid. So things like this, small little differences, the score difference does also matter going forward. चेतन साहू के इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो मुझे लगता है कि 28 के ऊपर वो पहुंच चुके होंगे। टॉप डिफेंडर्स, टैकल पॉइंट की यदि आप बात करते हैं तो राहुल पहला नाम, 19 अंक इनके नाम है। बिट्टू 18 पे वो भी है, हम्पी हीरोज के लिए खेलते हैं। वहीं राशिद तीसरे नाम वो नजर आ रहा था। आज का तीसरा मुकाबला भी उस टीम ने खेला था, लेकिन विशेष प्रदर्शन दिखा नहीं पाए थे। अपने पिछले मैच में जरूर वो 10 अंक लेके आए थे। This is what is needed. When not required, just don't deep enter the den when it's not required for the team. This is what is required for Periyar Panthers. They can just hold on, just guard the bonus line possible. But when you go for raid, unless it's do or die raid, you need not put that effort to get those points. हम्पी हीरोज का वो जो डिफेंस था वो लाजवाब था। अभी आपने कुछ समय पहले ग्राफिक देखा, वहां आपको नजर आए थे उनके युवा सितारे। तो यहाँ टडोबा टाइगर्स और पेरियर पैंथर्स भी बहुत ज़्यादा पीछे है नहीं डिफेंस और अटैक के इस खेल में। डिफेंस और रेडिंग भी आपको नजर आ रही है। अटैक के रूप में रेड को हम मानते हैं, काउंट करते हैं। रेडर्स अपना काम बखूबी निभाते हैं। पेरियर पैंथर्स अब तो यहाँ से समय किल करेंगे। राधिका, दे जस्ट वांट टू किल द टाइम ऑन द मैच सो दैट टडोबा टाइगर्स कैन नॉट गेट बैक। Absolutely, because the score difference, having as much score difference for Periyar Panthers will definitely work for them on the table. Points. 1 point. It is also so important. पेरियर पैंथर के खिलाफ एक और अंक टडोबा टाइगर्स के राजन ने निकाला। कॉर्नर के खिलाड़ी को बैक किक करने की कोशिश की, उसमें सफलता भी मिली। और चलिए लुत्फ उठाते हैं डू और डाई की सिचुएशन का। 5 का डिफेंस बोनस आपके लिए एक्टिवेट है नहीं। यहाँ से बैक होल्ड करने का प्रयास था, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस टैकल, और उसी के चलते पंकज शर्मा को एक बार फिर मैच छोड़ के जाना पड़ेगा। 2 अंक जर्सी नंबर 2 लेकर आए हैं।
Ankit Dilfaraz, that young raider, got very little opportunity to raid, but then when he got that opportunity, he has got him right on board. Now this is Ranjan Chaudhary. 6 members, so possibly you can look for the bonus first and then go for the attack. आपने कहा, राजन ने सुनने की कोशिश की थी और बोनस मिल गया टडोबा टाइगर्स को। 3 का डिफेंस एक बार फिर यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो रात होती है ना वो दिवाली नहीं कहलाती। नंबर 6 के रूप में हिमांशु रावत जो 3 पॉइंट ले चुके हैं टैकल में, उनको इस बार मैच से बाहर जाना पड़ेगा। No, so close to the radar. Why do you need to hold him? Just dash him off the court. You know what technique to use when that should be the presence of mind the player should have, Ayush. और बिल्कुल आपसे इससे सहमत हूँ, क्योंकि कवर की पोजीशन पे खेलते हैं, तो जब आप कवर पे हैं आपका तो मूलतः काम ही है या तो कॉर्नर को सपोर्ट कीजिए या विरोधी को डैश कीजिए। Tadoba Tiger, number 8 out. Less than 2-minute game. That was a bonus plus point for Rajan Chaudhary. Yes, a bonus attempted, and after which the left corner went for the ankle that missed. So that's a 2-point raid and 1 revival. And this is it again, a super tackle opportunity. Will they be lucky enough? Oh, look at that. Was that a target on the cover? चेतन, यदि यहाँ पर मल्टी पॉइंटर रेड लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पे ये वो जो रिकॉर्ड है 31 अंकों का विशाल चहल के द्वारा बनाया गया वो तोड़ देंगे। क्या ये मल्टी पॉइंटर रेड है? क्या यहाँ 2 अंक मिलेंगे? बिल्कुल 2 अंक मिल चुके हैं। इसका मतलब है कि स्कोर जो है वो मुझे लगता है बराबर कर लिया गया। राधिका 28 पॉइंट इनके पहले थे, बीच में ये 1 अंक लेकर आए, यहाँ 2 अंक। मुझे यदि मेरी गणना सही है तो 31 पे बराबरी कर चुके हैं ये विशाल चहल के स्कोर की। Now look at how beautifully done it, and this is a super duper raid for Tadoba Tigers in the dying minutes of the match. Though too little, too late for the team. You know the mistakes that did happen. Going parallel to the raider when you go for support, this is the advantage that happens to the opposite side. That's what I've been talking about, Ayush. ये थोड़ा सा जो मामला है ना वो फंस सा गया है और वो गलती हम में से किसी की भी नहीं है। कई बार कुछ ऐसी तकनीकी इश्यूज आ जाती है जिसको रिजॉल्व करने में समय लगता है, समय लगाते नहीं है। यहाँ चेतन पॉइंट लाने के लिए 4 के डिफेंस में मानता हूँ कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन मल्टी पॉइंटर रेट अब मैं 110% श्योर हूँ राधिका कि इन्होंने 31 से ऊपर पॉइंट क्लेम कर लिए हैं और ये युवा कबड्डी सीरीज के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल टोटल है एक ही मुकाबले में। Yes, for the monsoon edition, there is competition in the Raiders as well. You know, who scores how many points in a single match. And that's a beautiful example that we have seen for Chetan Sahu today. Bonus point for Tadoba Tigers, but then a tackle point for Periyar Panthers. अब यहाँ महज औपचारिकताओं का खेल बच चुका है टडोबा टाइगर्स के लिए। कितनी भी जद्दोजहद कर लीजिए, कितने भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन आपकी टीम जो है वो तीसरा मुकाबला जो है वो हारती भी नजर आएगी। Yes, this is the all-out number 5, if I'm not wrong, Ayush, for Periyar Panthers. That means you have got 10 additional points than what you have actually got. So this is the advantage of having an all-out in your wing. So the score difference very, very positive in favor of Periyar Panthers. और वो जो घड़ी है ना स्कोर की वो थोड़ी सी अटक सी गई थी, लेकिन अटकी जो गणित है वो हमारी है नहीं। यहाँ स्कोर के अंदर इजाफा लगातार होता हुआ आपको नजर आएगा। और चेतन ने आज वो रिकॉर्ड तोड़ के कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। अर्जुन राठी बहरहाल वो रेड पे गए थे और इसी के साथ मुकाबला समाप्त हो चुका है राधिका। Absolutely 20. I'm not sure if that score line was good because we are facing little technical issues on the scoreboard. But yes, we got the final score 25-46. So it's a 21-point margin. Periyar Panthers win their second match of the monsoon edition today. But Tadoba Tigers, this is the third consecutive loss for them, Ayush. तीसरी लगातार हार टडोबा टाइगर्स
इससे बचना था राधिका। अब 7 मुकाबले बचे हैं और आपकी जो पोजीशन है वो कम से कम टॉप 8 में होनी चाहिए। यदि आप बॉटम 2 पे रहते हैं तो आपको टाटा बाय बाय कह दिया जाता है और कोई भी टीम वो सुनना चाहती है नहीं। क्षमताएं इनके पास है, इनके पास अर्जुन राठी जैसे खिलाड़ी है, इनके पास राजन जैसे खिलाड़ी हैं जो डिफेंस भी कर सकते हैं और रेड भी डाल सकते हैं। लेकिन ये हाइलाइट्स के ऊपर नजर डालते हैं क्या कुछ हुआ एक्शन में। ये सुपर टैकल की सिचुएशन थी, जद्दोजहद रेडर ने जरूर की, लेकिन राजन और उनके साथियों ने कॉम्बिनेशन टैकल का कारनामा एक बार नहीं कई बार करके दिखाया। लेकिन चेतन नाम की इस आंधी को आप कैसे रोकेंगे? The only positives which we have seen in Tadoba Tigers is, Arjun Rathi scoring more than 10 points, and also defense going for those, if I'm not wrong, about 5 super tackles. That was the only talking points for Tadoba Tigers today, but everything went in favor of Periyar Panthers, especially when you talk about Chetan Sahu scoring more than 30 raid points. The defense, Gaurav Chiller also scored a high five. So that's the beauty of the team. Periyar Panthers runs away with the second consecutive win for the edition. Look at how beautifully he escapes with that super raid. This is the first super raid for Chetan Sahu. इनफैक्ट एक सुपर रेड उन्होंने आज के इस मुकाबले में लगाई थी, लेकिन अपनी टीम के लिए जद्दोजहद करते हुए अंत तक जब ये मुकाबला पहुंचा उन्होंने ये इंश्योर किया कि युवा कबड्डी सीरीज के इतिहास में एक मुकाबले में सबसे ज्यादा यदि कोई रेडर पॉइंट लेके आएगा तो वो चेतन साहू कहलाएगा। That's a good phrase from him. I'm sure when he goes back and listens to your commentary, he'll be filled with more Josh and Sunun and Jeshla going forward. And that's a good appreciation for Chetan Sahu, who came out of the bench and does it brilliantly. And next match we'll see at say 6 o'clock, and that would be the beautiful one to watch yet again. But then looking at what Periyar Panthers have done today, they have gone ahead and won their second match of the monsoon edition. Remember, they have won the first match against Murtal Magnets, lost the second one, but then again they have come into their own colors and won this match today, Ayush. 80% कार्य जो है वो हो चुका है आज के दिन का। अब बचावा 20%, उनमें से 10-10 कर देगी मुरथल मराठा मार्वल्स और सिम्सोनिक की टीम। ये भी एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। इसके लिए आपको करना क्या है, जुड़े रहना है हमारे साथ। 6:30 बजे ये मुकाबला प्रारंभ होगा और आज के दिन कई सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखने को मिले। रिकॉर्ड्स की जब बात करते हैं तो रिकॉर्ड भी हमने देखा है कि रिकॉर्ड बना है, बड़ा है, और इनफैक्ट वो काम जो चेतन साहू ने किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। And also the score difference is also huge enough, 19 points score difference, and 62 for Periyar Panthers is a good one. And yet again at 6 o'clock we will witness yet another match that would be, it would be Sensonics taking on Maratha Marvels at 6 p.m. That would be live from Ranchi. So stay tuned on Fan Code for more updates for the match at 6 p.m. Thank you, one and all.